Today we are going to discuss about the transaction in DBMS. Fine. So first we should know that what is the actual meaning of transaction. Transaction in terms of DBMS means transaction is a unit of work in a database system. Now what is the meaning of unit of work? जैसे आप कोई भी क्वेरीज करते हो डेटाबेस में, कोई भी ऑपरेशंस करते हो डेटाबेस में, ऑपरेशंस इन डेटाबेस मींस जैसे आप कोई क्वेरी कर रहे हो उसे लाइक सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, तो उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रहे हैं दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस. फाइन. नाउ जैसे आप बैंकिंग सिस्टम में अगर ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लो, तो इन द टर्म्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम द ट्रांजैक्शन मीन्स टू विड्रॉ मनी और डिपॉजिट मनी और ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम एज अकाउंट टू बीज अकाउंट एक्सेट्रा. मीन्स एक के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी का ट्रांसफर करना या विड्रॉ करना या डिपॉजिट करना, दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डेटाबेस. नाउ in terms of database management system, transaction means operations executed on a database like select, insert, update, or delete, etc. These all are the operations that we can perform in database management system. So, to perform all these operations, we use different types of commands, and if commands are getting successfully uh, completed, then it is known as transaction. Now, we will see that what are the different states of a transaction. So in a transaction, different states are: first, transaction will get started. So first state is start the transaction, then after it goes for execution, and if it is successfully executed, then it goes for commit. Commit means if a transaction commits, means अगर आपका transaction complete हो चुका है, then changes made are visible. वो आपका completely visible होगा कि आपने क्या उसमें changes किया था या किस टाइप का operations या किस टाइप का queries आपने execute किया था. So in simple words, the simple steps or states of a transaction are start, then execute, and then it goes for commit. Suppose जब आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, इन बिटवीन कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए, तो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो अबॉर्ट हो सकता है. इट मींस आपका ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, तो दीज ऑल आर द स्टेट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन. नाउ we will see that what are the properties of a transaction. Fine. So in short, it is known as ACID property. Now ACID stands for atomicity, consistency, isolation, and durability. This is a very important topic for DBMS. ACID stands for atomicity, consistency, isolation, and durability. Now, one by one, we will see that what is the meaning of atomicity, consistency, isolation, or durability. So, first we'll see about atomicity. Here it is written, a transaction is an atomic unit. Now, what is the meaning of atomic? Atomicity means it must either be successfully completed और नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल. वो आपका बीच का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए कि आपने एक ट्रांजैक्शन कर लिया और वो मिड में जाकर वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है. दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी मींस ट्रांजैक्शन मस्ट बी सक्सेसफुली कंप्लीटेड, या तो आपका सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होना चाहिए कंप्लीट 100%, या नॉट एग्जीक्यूटेड एट ऑल. सो दिस इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिसिटी. नाउ द नेक्स्ट वन इज नोन एज कंसिस्टेंसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी डेटाबेस के टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. फिर से यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी. जब डेटाबेस स्टोर कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, देन कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक द डेटा कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मीन्स प्रॉपर 100%. It must be consistent, meaningful. Fine. So let us see that what it is written here. The database must remain in a consistent state before and after a transaction. This property ensures that a complete transaction
execution takes a database from one consistent state to another consistent state. Means आपका जो डेटा है, जो डेटाबेस है, वो प्रॉपर कंसिस्टेंट मैनर में stored होना चाहिए before and after the transaction, so that it must be a meaningful data. Fine. Consistent means to how to maintain a meaningful data before and after a transaction, so that data can be fetched or data can be read properly. आप उससे कुछ डेटा एक्सेस कर सकते हो, फेच कर सकते हो, उसको आप प्रॉपर्ली अगर रीड करो तो आपका उससे कुछ मीनिंग निकलना चाहिए डेटा का. दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी. फाइन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ डेटाबेस. It actually refers to the correctness of a database. Correctness means data must be correct, proper, meaningful. So this is the actual meaning of consistency. Now the third property is isolation. Isolation. Now see, what is the meaning of isolation? Operations performed by a transaction. Operations means the queries like select, insert, update, delete, drop, anything in terms of database. So operations performed by a transaction must be isolated from those of other transaction. Now what is the meaning of this sentence? Let us see. The execution of a transaction should not interfere with other transactions being executed concurrently. Concurrently means at a time. साथ में. Isolation guarantees that the progress of other transactions do not affect the outcome of this transaction. Means isolation means एक क्वेरी का, एक ऑपरेशन का जो रिजल्टेंट है वो आपके दूसरे ट्रांजैक्शन को अफेक्ट या हैम्पर नहीं करना चाहिए. ठीक है. दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर द एग्जीक्यूशन ऑफ a transaction should not interfere with other transactions being executed concurrently. अगर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक साथ कर रहे हो तो एक का जो वैल्यू है वो दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए, वो दूसरे को इंटरफेयर या डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन. नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मीन्स होता है आपका परमानेंटली स्टोर्ड होना. मीन्स फॉर हाउ लॉन्ग योर डेटा इज going to be stored, how long your data is going to be meaningful. Fine. So let us see what it is written here. The modification made by a transaction must be persistently stored in the physical database. Fine. Durability means actually uh, this property, that durability ensures that once the transaction has completed its execution means जो भी आप उसमें वर्क परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप उसमें ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, like select, insert, update, delete, जो भी, the updates and modifications to the database are stored in and written to disk, and they persist even if a system failure occurs. Means वो आपका permanently सेव होना चाहिए डेटाबेस में, फिजिकल डेटाबेस में. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेबिलिटी. फॉर हाउ लॉन्ग डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली in a physical database for further use. So that is the meaning of durability. The updates can be saved for the permanent use and are stored in a non-volatile memory for further use. Fine. For further access of data, for further fetching of data. So these all are the properties like acid, means atomicity, consistency, isolation, and durability. This is a very important topic in terms of a transaction, and here it is written: states of a transaction are mentioned properly, and the first topic was what is transaction. So transaction, states of a transaction and properties of transactions are discussed here.